Cricbits and Pieces, and an expert panel. So, hello, and welcome to another episode of Cricbits and Pieces. We have the four semi-finalists for T20 World Cup, men's cricket, to be precise, right? And miraculously, Pakistan has reached the semi-finals by somehow. I mean, there is an ad that comes in the telecast, Aramco ka, powered by how? I think this is the Pakistani team, which is powered by somehow. They have made it to semi-finals at this point in time. England, New Zealand from the other group, and India, Pakistan from our group. India has topped the group by defeating Zimbabwe in their last league game. So that's what has happened. 9th of November is when Pakistan meets New Zealand, and 10th is when India will beat England. Okay, so yes. that's the semi-finals which are lined up as of now. So we'll talk primarily about कि Super 12 में कैसा रहा, क्या रहा, इन चारों टीम की जर्नी in particular, और सेमीफाइनल में हम लोग क्या देख रहे हैं. What are the things? एक सेमीफाइनल सिडनी में है, एक सेमीफाइनल एडिलेड में है, क्या उसका कुछ फर्क पड़ेगा? इंडिया पे फोकस ऑफ कोर्स रहेगा क्योंकि दिल है हिंदुस्तानी, और उसी हिसाब से हम लोग बातचीत को आगे बढ़ाएंगे. So that is the context that is going to be discussed in this particular episode. So with that, opening up the floor, anyone who wants to take it away. Rohit bhai, as usual, take it away. पहले तो ये है कि कल इंडिया ने जिम्बाब्वे को हराया, and the one thing that we had talked was कि ऋषभ पंत को भी मौका देना चाहिए. That happened yesterday. दिनेश कार्तिक को बैठाया गया, ऋषभ पंत को मौका मिला, but unfortunately ऋषभ पंत did not do well. वो एक चीज है. But the other big thing is Rohit Sharma did not do well. Hardik Pandya did not do well. Akshar Patel again did not get an opportunity yesterday to bat. So looking at India's whole thing is that कि भाई हम लोग बहुत हद तक डिपेंडेंट हो गए हैं कोहली, सूर्य कुमार यादव and KL Rahul. And if we have to win the semi-final, we want the contributions from others also. It cannot be कि भाई आप 2-3 बैट्समैन के दम पर आप निकालेंगे, because invariably now whether it is England or अगर हम फाइनल पहुंचते हैं, जो भी कोई न्यूजीलैंड या पाकिस्तान हो, the attacks are going to be good. तो वो चीज हुआ, and I think we missed one trick. We should have tried Chahal also yesterday, because again Akshar Patel's bowling was not convincing yesterday. Bowling darts is not going to give you wickets, unfortunately, in Australia. Indian pitches में जहाँ variable bounce and everything would be there, you will get that. But यहाँ जहाँ true pitches हैं, I think team management has to think about that. That's the thing that I thought about the Zimbabwe match. We had to win, we won. So that's the thing. PBY, your opinion. Yeah, I think I wouldn't read too much into the failure of Rishabh Pant. I think that was a screamer of a catch that the guy took on the boundary. I mean, that was like a Superman moment. And I don't think we have talked enough about Zimbabwe's fielding efforts in this tournament. And in fact, even for that matter, even the smaller teams, all the smaller teams, like Netherlands, for instance, that catch that he took off Miller, Vandermeer, that basically was the catch of the tournament for me. I just turned the game on its head, right? Yeah. So I wouldn't read too much into Rishabh Pant's batting effort. I don't think he had enough time to make an impact. One thing that I'm liking is everything you said. अभी तक हम लोग सिर्फ कोहली और सूर्या की बात कर रहे थे. Now KL Rahul is in the mix. That's a positive. Now, coming to our bowling, I don't think Akshar Patel should be in the squad. Like, especially after yesterday's performance. If you are not taking wickets against Zimbabwe, then what are you doing? Bowling darts on these pitches is not going to help you. We need to bring Chahal in. I don't know if it's at this stage of the tournament if we can bring him in, given that we are going straight into the semis. But I would love to see Chahal play against England. He could be our jack in the box, if you will, who'll be able to get folks like Hales. If Hales gets going, or if somebody in that top order gets going, I think Chahal could be that guy who can come in with his golden arm and break partnerships. So I personally, if I was part of that team management, I would play Chahal over Akshar Patel. +1 to our batting. I think Rohit Sharma hasn't fired. Hardik Pandya was a failure again in the last match. But again, Hardik Pandya continues to contribute with the ball, so he justifies his place in the squad. But unfortunately for Akshar Patel, I don't see that happening. And
our team management needs to take a good hard look at it. Yeah, pretty much. That's what happened in the last game. Akshar Patel, pata nahi. So bowling darts, I saw the match in which Mujib was bowling against Australia. He was the quickest of them, all the spinners in the game, and he got thrashed all around the park. So speed is not helping spinners as much, again, because of the true bounce in that sense, right? क्योंकि अगर आप रेप डालोगे थोड़ा सा में तो आपको शायद कुछ टर्न मिलेगा, देन यू हैव अ चांस टू बीट अ बैट्समैन, राइट? एक्स्ट्रा बाउंस का भी स्कोप है वहां पर, बट आप डार्ट फेंकोगे तो इट विल लैंड अप. अगर बैट्समैन दिख रहा है, अगर बैट्समैन को दिख रहा है ढंग से, तो ही विल हिट यू आउट ऑफ द पार्क. प्रीटी सिंपल. रोहित शर्मा's batting is a bit of concern for India at this point of time, क्योंकि रोहित शर्मा से we expect a big game player है. Now is the time. These are the big games, right? The two big games that we are expecting to play. So that is something that needs to improve as soon as possible. But Rohit Sharma is Rohit Sharma. The sad part for Rohit Sharma for me is that कि वो पुल मार के भी आउट हो जा रहा है, which should not happen. कितना भी बड़ा ग्राउंड हो, रोहित शर्मा का पुल should cross the boundary. But इसका मतलब है कि कुछ प्रॉब्लम उसका लाइन लेंथ या बाउंस रीड करने में गलत हो रहा है. That is the only thing that I can think of. कि पुल पे अगर रोहित शर्मा का कैच जा रहा है and well inside the boundary, ऐसा भी नहीं कि बाउंड्री पे ऐसे पकड़ रहा है, अंदर आके ऐसे. He's probably the best player that we have against short bowling, and he's by far been our best batsman against short bowling for the past decade. Yeah. It's just surprising not to see him score in Australia. It doesn't add up. So just to add one thing, can we say his reflexes are getting weaker now? He's 35, and nobody says that he has a great fitness. Everybody can see that thing. So maybe age is catching. That's one of the things. Again, I would not like to say these words. This is just an observation, and I won't that I would be wrong on this account. Yep. I would like that I'm wrong, but then that's one of the things that comes to my mind, because even the greatest of the players, once you go in the wrong side of 30s, invariably, reflexes get weaker. Because I'll tell you, yesterday Muzalbani took him, I think. In Bangladesh, that guy Hassan took him. He was playing that off में cut shot. तो मतलब that's what, ऐसा नहीं है कि पेस भी कुछ ज्यादा है इन लोगों का, मतलब ठीक है 130s में होंगे. So it's not that कि आपको वुड ले रहा है या फर्गुसन ले रहा है, something of that sort. That is one thing. Another thing, just on a weak lighter note, I would like to add कि हो सकता है ये World Cup is not made for the captains, at least for the batting purpose. अगर आप देखते हैं बाबर आजम 61 के स्ट्राइक रेट पे ही इज प्लेइंग दिस होल वर्ल्ड कप. रोहित शर्मा हैज हार्डली 150. शकीब हैज नॉट कंट्रीब्यूटेड बैटिंग वाइज. दशुन सनाका तो क्यों है, वो तो श्रीलंका ही जानते हैं, उस पर मैं नहीं जाऊंगा. सिमिलरली बबुमा, विलियमसन का लास्ट इनिंग छोड़ दीजिए, कुछ नहीं है. बटलर के पास एक इनिंग है. फिंच तो भाई क्रीज पे बस रह जाता है. पूरन तो पहले ही चले गए. तो मतलब बैट्समैन के लिए ये वर्ल्ड कप नहीं था. एज अ कैप्टन अगर बैट्समैन है आप, तो भाई इससे अच्छा आप बाहर बैठिए, अंदर में रन नहीं बनेगा. That's one of the other observation that I had. That is the trend. But coming on to the other teams in the semi-finals, right? हमने इंडिया की बात कर ली, of course, and we have been talking about India during the course of all the episodes that we have done, right? How has India made it to semi-final, topping the group? Expected. साउथ अफ्रीका वाला मैच हम हारे, वेरी क्लोज. इट वाज अ लो स्कोरिंग मैच, इसको हम काफी क्लोज लेके गए बिकॉज ऑफ आवर बॉलिंग. बांग्लादेश वाला पहला 7 ओवर वाज अ ग्लिच इन द मैट्रिक्स, बट अदर देन दैट इट वाज अ सीमलेस मैच एज एक्सपेक्टेड. इंडिया का परफॉर्मेंस, वी केम बैक वेरी स्ट्रांग फ्रॉम दैट पोजीशन एंड क्लोज्ड इट आउट. 5 रन थोड़ा क्लोज चला गया था बिकॉज ऑफ द फर्स्ट 7 ओवर्स प्राइमरली. उसके बाद तो ज्यादा कुछ हो नहीं पाया. जिम्बाब्वे से इट वाज अ क्लियर 70 रन से ऊपर के मार्जिन से हम जीते, 70-72 रन से, which was again expected. Pakistan wala match went to the wires, again expected. But that is how India is made into semi-finals. But I think we should also talk about the other 3 teams, New Zealand, England and Pakistan, right? तो जिसके बारे में भी पहले बात करना चाहें, we can start with that. So, Parashar. Pakistan, I hate to say this, but
the unpredictability of Pakistan that has me worried. I mean, this is very reminiscent of 92 World Cup, right? Down in the dumps, कोई chance नहीं है, बाहर हो गए tournament, and all of a sudden Pakistan comes back, and and again Babar Azam is no Imran Khan, and they don't have, and Shaheen Shah Afridi, maybe Shaheen Shah Afridi is close to Wasim Akram at his peak, who knows? But Pakistan's unpredictability, that's something to look out for, especially in the semi-final against New Zealand. Again, New Zealand is a very clinical side. You know what you're going to get. You know what the top order is. You know how the fielding is going to be. You know what that bowling lineup looks like. So when you put an unpredictable side against a team which is very clinical, no less, individual heroics can just turn the tide. And that is what I'm worried about with Pakistan. Ki suddenly Babar Azam 61 के strike rate से बनाए हैं, 61 के strike rate से जितना भी उनका average रहा है, and he decides to wake up in the semis and goes on to hit like 100. Who knows? So that's what has got me worried. Obviously, I would consider at this stage India to be one of the favorites. Like just looking at league performances and all. I know England has had a very good run in the league matches too. There were no upsets, so to speak. Just say India lost to South Africa, and the glitch in the matrix that we keep talking about with Bangladesh. I can't remember England having any such moment. Ireland. Yes, Ireland was one. So yeah, so they're all lined up pretty evenly in that sense. But I think Pakistan going into the semis, for me, I would, as an Indian, I hate to say this, but my eye would be on Pakistanis. नहीं तो पाकिस्तान go ahead. नहीं please अजीत भाई बोलिए. तो पाकिस्तान के बारे में the thing is कि उनका top order which was expected to be their strength has not fired yet, right? बाबर आजम कल पहली बार डबल डिजिट पहुंचा है इस पूरे टूर्नामेंट में और 25 रन बनाया है कुछ मेरे ख्याल से 30-32 बॉल पे और काफी खराब. और रिजवान भी शुरुआत भी जब तेज कर रहा है तो इवेंचुअली 100 के स्ट्राइक रेट पे आके आउट हो जा रहा है. कल भी 35 पे 35 32 कुछ बना के गया. तो उनका जो एक्सपेक्टेड स्ट्रेंथ था that has not fired yet. The bowling has been doing well, but मैच फिनिश नहीं कर पाए वो लोग. जिम्बाब्वे वाला मैच फिनिश नहीं हुआ, इंडिया वाला मैच फिनिश नहीं हुआ, बांग्लादेश वाला मैच दे पुल्ड बैक एंड गॉट इट, बट वो भी इवेंचुअली फाइनली बैटिंग से. हैरिस, मोहम्मद हैरिस और इफ्तिकार अहमद और शान मसूद, ये 3 अनएक्सपेक्टेड हीरोज हैं अभी तक पाकिस्तान के कैंपेन के, राइट? इन 3 से कोई उम्मीद भी नहीं कर रहा था कि मतलब हैदर अली को खिला रहे थे ये लोग, मोहम्मद हरीस को तो अभी 2 मैच से खिला, राइट? तो पाकिस्तान की अनप्रेडिक्टेबिलिटी तो ठीक है. व्हाट आई एम रियली इंटरेस्टेड इन सीइंग इज हाउ फिन एलन ट्रीट्स नसीम शाह एंड शाहीन शाह अफरीदी इन द पावर प्ले, बिकॉज न्यूजीलैंड एज यू सेड टेम्पलेट क्रिकेट खेलता है, क्लिनिकल क्रिकेट खेलता है, और फिन एलन का रोल डिफाइंड है, और आई डोंट थिंक ही इज गोइंग टू डेविएट. ही विल नॉट सडनली बिकम अ टेंटेटिव प्लेयर जैसे हमने अपने ओपनर्स को देखा था पाकिस्तान के अगेंस्ट, राइट? सो दैट इज नॉट गोइंग टू हैपन. एंड हाउ डज शाहीन शाह अफरीदी रिएक्ट टू दैट? बिकॉज गौतम गंभीर इन अ लॉट ऑफ हिज थॉट्स हैज सेड कि शाहीन शाह अफरीदी को अगर आप अटैक नहीं करोगे तो वो आपको विकेट ले लेगा. यू हैव टू अटैक हिम फ्रॉम द फर्स्ट बॉल इज व्हाट गौतम गंभीर रीडिंग सेज, राइट, फॉर शाहीन शाह अफरीदी. कैसे काउंटर करना है उसको, दैट विल बी इंटरेस्टिंग. आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू फिन एलन वर्सेस शाहीन शाह अफरीदी on 9th of November. Sydney है, so hopefully Finn Allen will be able to at least make some impact, is what I'm hoping. Rohit bhai. Basically पाकिस्तान का 5 मैच ना पाकिस्तान को उसका असली टीम, सही टीम चुनने में मदद कर दिया है. उनके जो खराब प्लेयर्स हैं वो बाहर चले गए बैट्समैन के तौर पे, और उनके अटैक का एक बहुत अच्छा एबिलिटी आप लोग देखिए, उन्होंने इफ्तिकार को भी अब यूज करना शुरू कर दिया. ऑफ स्पिनर को, ऑफ स्पिनर है, लेग स्पिनर है, लेफ्ट आर्म स्पिनर है, लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर है. तो अटैक वाइज दे आर लुकिंग वेरी गुड. ऑफ कोर्स उनके ओपनर्स नहीं वर्क कर रहे हैं, बट आई एम रियली वरीड बिकॉज उनके लिए 92 के स्टार्स हैव बिकम टू अलाइन फॉर देम. सी अगेन आई अलाइन विथ यू बोथ कि न्यूजीलैंड से जो मिलना है मिलेगा. न्यूजीलैंड के लिए आई थिंक नीशम हैज नॉट फायर्ड. वो जगह जो डैरल मिशेल वाला है, नीशम वाला रोल है, वो अभी भी खाली है. एंड देयर इज वन बिग गैप दैट प्लेस. आई एम मोर इंटरेस्टेड इन इंग्लैंड बिकॉज हम लोग इंग्लैंड के साथ खेलने जा रहे हैं सेमीफाइनल, एंड आई एम नॉट रियली श्योर कि डेविड मलान खेलेगा या नहीं.
because he was hobbling in the last match. तो number 3 पे maybe Malan is not there. And if you look at the other players, because उनके अटैक में पूरा एक डेविड मलान ही है जो रुक के खेलने वालों में से है, अदरवाइज अदर ऑल द क्रिकेटर्स दे कीप ऑन अटैकिंग. सो अगर डेविड मलान नहीं है तो मे बी दिस रोल विल बी प्लेड बाय बेन स्टोक्स. ही इज द नेक्स्ट क्लोजेस्ट दैट कम्स टू दिस होल थिंग. एंड आई वुड ऑल्सो लाइक टू सी कि भाई क्या वो कोई बॉलिंग चेंज करने जा रहे हैं, जो कि मुझे दिखता नहीं है. मतलब अगर इसके अलावा मतलब उनकी टीम मोर और लेस विल बी द सेम. सो अगर इंडिया एंड इंग्लैंड हम लोग जो थर्सडे को मैच खेलने जा रहे हैं, माई ऑब्जर्वेशन इज कि एक हम क्या चेंज करते हैं और वो क्या चेंज करेंगे. दैट विल बी मोर ऑफ अ फोर्स चेंज फॉर देम. उनके पास भी मोइन अली है, आदिल रशीद है, दोनों स्पिनर है. मार्क वुड में एक अच्छा खासा पेस बॉलर है. बेन स्टोक्स इज अ गुड ऑलराउंडर. सैम करन इज देयर. तो मेरा एक चीज यहाँ पे आप दोनों से एक सवाल ये है कि शुड बी, क्योंकि हार्दिक पांड्या तो आपका 4 ओवर हर मैच में दे रहा है, तो डू वी नीड 6 बॉलर्स और शुड वी ड्रॉप अक्षर पटेल एंड ब्रिंग इन वन मोर बैट्समैन सो दैट वी आर मोर अटैकिंग, बिकॉज हमारा 3 ही बैट्समैन चल रहा है. आइदर दिनेश कार्तिक कि भाई आपको और फ्रीडम मिले, और शुड वी गो अहेड एंड लाइक टू लाइक मतलब लेफ्ट आर्म स्पिनर को निकाल के लेग स्पिनर को लाते हैं. व्हाट डू यू सी विद रिस्पेक्ट टू इंडिया इंग्लैंड मैच? Arjun, I think I'll let you go first because I think my opinions are pretty known on this point. But I'll tell you. So I know your opinion, of course. I think everyone knows. Whoever has listened to any of the episode will know. लेकिन मेरा प्रॉब्लम है कि चहल को लाने से ना the tail becomes even longer. We already have a long tail, and we know Mark Wood will create enough trouble at the top for probably Rohit Sharma especially. एंड हमारा हार्दिक पांड्या का बैटिंग काफी इनइफेक्टिव चल रहा है ऑलरेडी, एंड दे आर नॉट गोइंग टू मेक इट इजियर फॉर हिम, राइट? तो अगर हम वहां पर भी अगर हम अक्षर को हटा के चहल है, ऐसा नहीं है कि अक्षर कोई बैट से बहुत ज्यादा तोड़फोड़ कर चुका है ना, उससे उम्मीद कर सकते हैं बहुत ज्यादा, बट चहल से बेटर उम्मीद किया जा सकता है अक्षर से विद द बैट, राइट? सो दैट वेज आई सी अ हाई रिस्क इन ब्रिंगिंग इन चहल इंस्टेड ऑफ अक्षर. अगर चहल को आना है तो ही हैज टू कम इन अश्विन. अक्षर के जगह पे we will need someone who can hold a bat, right? I don't think Huda is the right man. I don't think DK is the right man, and I don't think Harshal is the right man, right? तो पता नहीं, but अक्षर को रिप्लेस करने के लिए थोड़ा सा बैटिंग स्किल एक्सपेक्ट रहेगा, जस्ट फॉर द सेफ गार्डिंग कि भाई है ना हमारे पास. क्योंकि इफ यू नो इंग्लैंड विल बैट टिल नंबर 8-9. उनका सैम करन इज इन सच अ ग्रेट फॉर्म विद द बॉल, विद द बैट, सब कुछ कर रहा है. फील्डिंग भी बहुत अमेजिंग कर रहा है, कैचेस ले रहा है. तो सैम करन अभी अपने मेरे ख्याल से पीक पे चल रहा है, वैसा कह सकते हैं. और बेन स्टोक्स उनका सेफ डिपॉजिट टाइप का है. 2 ऑलराउंडर, मोइन अली इज मोइन अली. 3 ऑलराउंडर जो किसी भी स्किल से गेम पलटने का मादा रखते हैं, राइट? मोइन अली अगर वो 3 नंबर पे आके जो वो करता है, अगर वो करके चला गया 15-18 बॉल में, then he just elevates a 160 score to 180 then and there. तो इंग्लैंड के साथ के लिए आई थिंक अब दिक्कत ये है कि if you are going against such a good opposition, you will want to have player who can fire with the bat, with the ball. Sadly हमारा हार्दिक पांड्या दोनों से नहीं कर पा रहा है, और अक्षर मतलब हार्दिक पांड्या एक से कर पा रहा है और अक्षर दोनों से ही नहीं कर पा रहा है. तो we don't know. जो है अपने पास वही है. So I think based on I don't think based on but देखते हैं. Sorry. Based on everything that I've seen in the tournament so far, I consider Ashwin to be a better batsman than Akshar Patel and DK both. Ashwin has batted better in crunch situations. So let me paint a picture for you. Our team is 70-4, batting first, right? Trying to set a target. I think what we are talking about is कि 70 पे अगर मान ले हम 4 down हैं, who do we want coming in? We certainly don't want Chahal to be coming in any close to हमारा 6 number batsman जो है. So now the question becomes, does it make sense to have Akshar Patel coming in at that number? Does it make sense to have Dinesh Karthik coming in? Or is Ashwin going to be our bet at that point? Based on everything that I have seen, I'm comfortable having somebody like Ashwin coming in at number 6 with the understanding कि उसका काम मारना नहीं है. उसका काम एक एंड पे फंस के खेलना है, assuming कि दूसरे एंड पे there is somebody, either Kohli or Surya or somebody from the top order has continued to bat through. Like that is the situation where I'm trying to understand कि what would be the right mix.
Now, coming to, Chahal versus Akshar versus Ashwin, I think we should play to our strengths. And our strength right now looks like bringing in our best spinners into the mix, people who can take wickets and who can, if England is batting deep, there is no way you'll be able to contain them by having them, I don't know, 150 for 4 at the end of 20 overs. That's not going to happen. The only way you'll be able to contain them for 150, 160 is by taking a lot more wickets. And you're not going to do that with an Akshar Patel in your bowling lineup based on everything that we have seen in the tournament so far. So I would still play my wrist spinner, play pure bowlers, and, I know I used the phrase last time, hope is not a strategy, but hope that Ashwin is our guy who will be able to bat, given if let's say we are under the push where we have lost some early wickets and we need somebody to stick it out in the middle from the other end. Dinesh Karthik unfortunately hasn't shown that in the few chances that he has been given in the tournament. So I would probably play instead of Akshar, I would play Chahal and keep the rest of the batting lineup the same. Okay. एक और क्वेरी है मेरा आप दोनों के लिए. Who is our best batsman in this whole World Cup for us? Kohli. Not Surya Yadav? Surya. Kohli. Okay. For me, it'd be Kohli. My question here is that if at all, because आपने कोहली कह दिया तो question meaningless हो जा रहा है, but for अर्जित भाई, आपने सूर्या का नाम लिया है. हाँ. Surya Yadav in 5 matches has scored around 225 runs and has played only 116 balls. So on an average, I'm saying he's facing 23 balls per match. And it's not that he's getting out. Yesterday, कल के मैच में 25 बॉल में 61 नॉट आउट. सेम उसी वक्त बाकी लोगों ने 25 बॉल में शायद 26 या 27 रन बनाए. सिमिलरली अगेंस्ट एक और मैच में वो नॉट आउट रहा नेदरलैंड्स वाले में. He made some 50 और वहां भी हाफ सेंचुरी मारा था वो. 25 बॉल में 51. साउथ अफ्रीका में 40 बॉल खेल के 68 he got out in the 19th over. My only question is, मतलब एक पाकिस्तान के खिलाफ he failed 10 बॉल में 15, अदरवाइज बांग्लादेश के खिलाफ भी 30 रन बनाया था 15 बॉल में. My question is, do you see that he should be given more opportunity? मतलब क्या हम लोग can we be a bit funky and we think him as number 3 also in semi-final? नहीं, Rohit bhai, not. I don't see that happening primarily because Surya Kumar Yadav at number 4 allows Kohli to build his inning the way he wants to build and the way that he has been able to build and score those runs, all the runs that he has scored. आप देखेंगे अगर Kohli when he's batting with Surya, उसका batting much better जा रहा है. That is why I said Surya, because Surya is not only scoring his runs, Surya is allowing the batter at the other end also to play freedom, to play with that freedom कि वो अपना inning build कर पाए. Primarily Virat Kohli, because Virat Kohli and Surya are the 2 batters who are winning us games, right? KL Rahul has started scoring runs, but he's not winning us games at this point of time. I don't see KL Rahul as the match winner till now. 2 हाफ सेंचुरी बनाया है, खराब बॉलिंग अटैक मिलेगा, वो 50 रन जरूर बना देगा और अगली बॉल पे आउट हो जाएगा. ठीक है, अब उसको खराब बॉलिंग अटैक नहीं मिलने वाला है किसी भी 3 टीम से अगर हम लोग खेलने वाले हैं, मतलब आइदर न्यूजीलैंड और पाकिस्तान या फिर इंग्लैंड. ठीक है, पहला ओवर मेडन खेलना, कितना भी तुम बना रहे हो रन, पहला ओवर मेडल खेलना नहीं अच्छा स्ट्रेटेजी है 2020 में. कुछ भी कर लो, वो 3 मैच से पहला ओवर मेडन खेल रहा है. केएल राहुल मैच जिताने वाला बैटर नहीं है, रन बनाने वाला बैटर है अभी तक जो देखा है मैंने उसको इस वर्ल्ड कप. मैं सिर्फ इस वर्ल्ड कप को यूनिवर्स मान के चल रहा हूँ. ठीक है, केएल राहुल के टैलेंट में कोई शक किसी को नहीं है, बहुत बवाल बैट्समैन है, उसको साला कप्तान भी बना के ये लोग मानेगा, बट जो भी करे उसको अभी तक जो वो दिखाया है, वो 50 रन बना सकता है, मैच नहीं जिता सकता है. तो मैच हम लोग को 2 ही बैटर जिताएगा अगर बैटिंग से जीतना है तो, सूर्या और कोहली. एंड सूर्या अपना रन बनाता ही है, बट कोहली को ही इनेबल्स, उनका दोनों का बहुत अच्छा जोड़ी है. वो जो फायर एंड आइस टाइप का ये लोग खेलता है और उसके बाद जरूरत पड़ने पे दोनों फायर हो जाते हैं, वो बहुत अमेजिंग है. दैट इज व्हाई आई सेड सूर्या. एंड आई थिंक वो टॉप 4 में कोई चेंजेस होगा नहीं एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम. चाहे राहुल रोहित फेल भी करता रहे, तो दोज आर द 2 पीपल दैट आर. सैडली पाकिस्तान से बहुत ज्यादा डिफरेंट नहीं है हमारा सिचुएशन उस मामले में.
टॉप 2 को हम हिला नहीं पाएंगे, चाहे कोई कुछ भी कर ले, कितना भी फोरम चला ले, कितना भी पॉडकास्ट पे बोल ले, वो टॉप 2 हिलेगा नहीं, वही रहेगा। और 3-4 भी आई डोंट थिंक So I'll सूर्या को। so I'll probably start with why I think Kohli is the better of the two, because I think that was a bit of a surprise. The Pakistan inning, that was a big match. Kohli scored runs when it mattered, and for me that counts for something. Yes, Surya has performed. He's done things on the ground that many other people haven't, can only imagine, in their dreams being able to pull off. But Kohli getting runs in that Pakistan game tips the balance for me. That's one. Dusri cheese regarding everything that Arjit mentioned, like spot on. Like Surya is the perfect foil for Kohli. It's helping him build those innings in the middle, which is letting him bat through and through to be able to get to a point जहाँ पे अगर 15-16 ओवर के एंड पे कोहली अगर है, it doesn't matter, क्योंकि वो भी उतना ही ताबड़तोड़ रन बनाएगा जितना ताबड़तोड़ सूर्या मार रहा है. एंड पाकिस्तान गेम was a clear example of that, कि अगर वो लास्ट तक रह गया तो ऐसा नहीं है कि वो स्ट्रगल कर रहा है, फंसा हुआ है. जैसे दिनेश कार्तिक फॉर इंस्टेंस, he came in as the guy who was the finisher, he was the closer in the matches, but he hasn't been able to deliver on that. But Kohli has, कि वो इनिंग तो बिल्ड करेगा ही, बट लास्ट में he's well capable of picking up the pace. दूसरी चीज, given the bowling attacks that we're going to face, assuming that England and I don't know, Pakistan, let's say in the final, Surya को और balls मिलेंगे. I know it's not something that people want to hear, but I don't see our top 2 scratching around for 6, 7, 8 overs at a stretch. वो अच्छी bowling lineups है. बांग्लादेश वगैरह के against, there was an opportunity maybe to just stick it out, and Taskin Kaspel मान लो see off कर दिया, तो दूसरे end पे there are enough bowlers कि हम लोग मतलब nudge around कर सकते हैं, रन निकाल सकते हैं. England वगैरह के against will get exposed. तो वो जो सूर्या को कम बॉल्स मिल रही हैं, I think that's a valid argument, रोहित भाई. I don't think that's a valid argument for the semis and the finals, because हमारी बैटिंग जो top 2 है ना, वो expose होगी. Rahul is back in form. But to Arjit's point, there's still a little bit there that needs to be proved out in this World Cup, at least against quality attacks. अजित भाई और पीपी भाई, देखिए, हम क्वेश्चन तो आप दोनों से पूछे, हम भी जानते हैं कोई चेंज नहीं होगा, लेकिन मेरा एक और इसी क्वेश्चन में ये है कि मेरा पॉइंट क्या है कि सूर्य के साथ कल जब हार्दिक खेल रहा था, या उससे पहले पंत था, या थोड़ी देर जैसे कोहली भी था, what is happening is कि he is not getting that much strike also. One of the things is you want your best batsman to capitalize. I understand आप सेमीफाइनल में ये चेंज नहीं करेंगे. I knew that answer. आप सबों का मानना है कि भाई थर्ड कैसे कर दोगे. वो तभी होगा जब मे बी 18th ओवर में हमारा पहला विकेट गिरे तो थर्ड पहले भेजो अभी सूर्य कुमार यादव अंतिम 12 बॉल खेलने के लिए, अदरवाइज नहीं होगा. बट माई पॉइंट हियर वाज कि if let's say if I'm a batsman and if I know I'm not doing that good, 18 balls में 18 बना के या 16 रन बना के, इससे अच्छा है कि why not I'll try and give the strike to the batsman who is on the मतलब doing whatever he wants. मतलब कल की इनिंग में सूर्य कुमार यादव is like कि भाई अब literally he can do anything whatever he wants. I know maybe some of those things are not possible against the best of the attacks, but South Africa के खिलाफ पर्थ में also he played South Africa some of the he scored the runs. So my only point is कि साउथ अफ्रीका वाले भी मतलब उस पूरे इनिंग में he did not get enough balls. 40 बॉल खेला, 19th ओवर में आउट होके जा रहा है बंदा. So my only thing is कि the number, I'm not asking about 1, 2, 3, but the number 5, 6, 7. But then we should ask about 1, 2, 3. देखिए, अगर सूर्या को ऊपर खिलाना है तो the one permutation that I can think of is bat Rahul at 4. कोहली को ओपन करो. Kohli, Rohit Sharma open, Surya bats at 3, Rahul bats at 4. Why not? I don't think that change will happen now. But that's not going to happen. That's my point. That's not going to happen, especially with Rahul Dravid as the coach. That's not going to happen. He's going to continue to back his players, especially Rahul, and results थोड़े बहुत दिखने शुरू हुए हैं. But that's a permutation that can be explored, right? अजीत भाई, एक चीज बस अजीत भाई बस आप बोलिए इसके बाद. मतलब एक चीज बस ये था कि हम लोग we were preparing, we gave Surya opportunities as an opener also. यहाँ आने के पहले, and as an opener you get the maximum number of balls, not maybe for this World Cup, but in future if he is your best batsman, don't we think that maybe he could have been opening only. भाई तो मतलब हो सकता है 20 बॉल पावर प्ले में ही खेल के 70 रन आपको देके चला जाए.
not now, because I know semi-final final जा रहा है, हम लोग उसके But beyond जा रहे हैं. so I do wanna push you on that. So Surya against quality bowling, new ball, facing the new ball in, let's say, testy conditions. Is there evidence to show that Surya can negotiate that and still get runs? The thing is, if you look at his innings that he played in England, 117 जो उसने बनाए थे, that was his century. I thought that was a brilliant innings. Before that also, मतलब इंग्लैंड में एक छोटा ही इनिंग था, 39 का बनाया था उसने फर्स्ट T20 में. That was also very good inning. Similarly, मतलब बाकी तो उसके मेजरली जो इनिंग्स है, that has been India में. ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 46 बनाया. No, but 69 I'm बनाया. asking as somebody who hasn't followed that cricket as much, so it's out of curiosity. Like, is there Because, evidence? So clearly there is. Clearly there is. There is. That's the thing. हाँ, अर्जुन भाई प्लीज, आप बोल रहे थे कुछ. सॉरी. नहीं, what I was saying is कि राहुल को 4 पे ना खिलाएं, ये बहुत जरूरी है, क्योंकि राहुल 1 नंबर पे मैच हरवा नहीं पा रहा है, वो 4 नंबर से हरवाने लगेगा. ठीक है. थैंकफुली 3-4 पे कोहली सूर्या है हमारे पास, जो लोग मैच बना देते हैं उसके बाद भी. बट राहुल एट 4 इज गोइंग टू बी डिजास्टर. ये लोग वनडे में उसको ट्राई कर रहा है. 50 ओवर्स में देयर इज स्टिल चांस. राहुल का गेम अडेप्टेबल है, विद 50 ओवर की एंड में आके थोड़ा सा 35 ओवर से 50 ओवर के बीच में रहेगा, तो ही कैन एंड विद अ फ्लरिश एंड ऑल दैट. बट 2020 में मिडिल ऑर्डर में बिल्कुल जगह नहीं है. राहुल कैन ओनली ओपन. मिडिल ऑर्डर बहुत लोग हैं, ओपनर में भी हमारे पास बहुत लोग हैं. बट देखते हैं हाउ इट गोस. अभी इस वर्ल्ड कप पे फोकस करते हैं. बट आई थिंक we already know what are the 2 semi-finals that are going to happen. So 9th November is Pakistan versus New Zealand in Sydney, right? क्या लगता है आपको उस मैच में रिजल्ट एंड द स्टार ऑफ द मैच? प्रिडिक्शन टाइम. रोहित भाई आप शुरू कीजिए. My heart says New Zealand should go. My mind is saying Pakistan is going. I'll tell you, I'll be very very frank. मुझे पता नहीं क्यों, मतलब पाकिस्तान से डर लग रहा है अभी. पता नहीं वो मतलब they are, मतलब right time पे पीक हो रहे हैं as a team. And the biggest thing is उनका जो मेजर 2 प्लेयर है जिसपे सारा कुछ लगा के रखा था, they both are not doing good right now, batsmen. और ये हाँ, येट टू फायर. और ये आप नंबर 3 हैरिस, इफ्तिकार, शान मसूद, ये लोग जिता रहे हैं आपको. शदाब, his inning against South Africa was brilliant. So that is one thing that I'm really worried about. And so my prediction is that I hope New Zealand wins, but I'm really not sure about that कि क्या होगा. But then I'm very sure कि एक cracker of a game होगा. New Zealand always give their 100% or more than 100% when it comes to World Cup or any of the global events. And you were asking about the star of the match. See, from Pakistan's side, I think Haris Rauf, because he hasn't got the wickets right now. He has been bowling brilliantly. Maybe uska turn hai. He should get the wickets. As far as New Zealand is concerned, see, I think Glenn Phillip, if he gets an opportunity, he'll again do good. He is मतलब destructive mode में आता है. मतलब day 1 से point 1 से he with one agenda की मारेंगे. और bowling में I would like Ferguson to do good. Ferguson would get the pace मिलेगा. सिडनी में मजा आना चाहिए उसके bowling पे. I'll make a bold prediction. Pakistan versus New Zealand. I feel if Pakistan bowls first, they're going to blow New Zealand out of the water. Like their bowling attack, I would not be surprised if New Zealand is 30 for 5 in the first 6 to 7 overs. Match शुरू होने के पहले ही खत्म होने वाला हिसाब. Because Pakistan has me worried. They are peaking at the right time. Their bowling is their strength. And अगर आप Devin Phillips को, Kane Williamson, I know he scored पिछले वाले match में, but he hasn't been at his peak. So if Williamson doesn't fire against a quality bowling attack, New Zealand might find themselves short. And agar वही depends, Haris Rauf और Shaheen Shah Afridi इनकी fast bowling lineup किस mood में उठेगी, मतलब what side of bed they get up on. But I'm worried that it might not even be a contest. If Pakistan bowls first, New Zealand's batting might get exposed, but we'll see. Again, I'm making a bold prediction. It might come back to bite me, but let's see what happens. So New Zealand versus Pakistan in Sydney, my prediction is New Zealand wins.
and the star of match will be Finn Allen. बहुत मारेगा, जितना तेज आएगा उतना तेज जाएगा, is what I predict. Sure. अब आते हैं दूसरे सेमीफाइनल पे, which is India versus England in Adelaide. Winner and star of the match. Parashar, you start. India wins, and Kohli is the star of my match. And I do see Hardik Pandya's batting woes hopefully ending in the England game against the likes of Moeen Ali, Rashid. I want to see Hardik Pandya face them. What do you think? आई थिंक विल विन, उसमें तो कोई शक ही नहीं है. और हमारा भी थोड़ा स्टार्स तो अलाइन होना चाहिए ना. वी डिफीटेड इंग्लैंड इन 1983 सेमीफाइनल्स आल्सो, और तब जाके 1983 का फाइनल जीते थे. नो, आई लाइक टू लुक इनटू दीज मैचअप्स. तो भाई जीतेंगे. एंड स्टार, आई थिंक either of the, batting wise, I also think Kohli will do good. मतलब कोई शक नहीं है. He will be the star of us. And maybe bowling wise, Ashdeep would be there. He would do good. He would, मतलब कोई भी इनमें दोनों में से कोई भी स्टार हो सकता है from our side. And I think कि हमें बस we have to contain Butler. Yeah. को आप, you cannot allow him because he has only played one innings of substance in this World Cup. अगर उसको कंट्रोल करते हैं, we'll be able to do good. We'll do good. That's the thing. Ajit bhai. Yeah, I think it is unanimous. India wins and Kohli stars because Adelaide is Kohli's ground. Absolutely. So, Yeah. Wrapping the predictions. Any final comment point that you want to make about the semi-final as a whole? Not semi-final as a whole. I would only predict that this World Cup has been really, really exciting. मतलब इतना ज्यादा memorable games. मतलब I cannot recall last year's World Cup का matches को भी. I just don't remember कि क्या हुआ था बाकी टूर्नामेंट में. मतलब मुझे नहीं याद है. Not because India was out. We watched. Toss has been not the great factor. That's a very good thing. Number two, if we had talked about this earlier also, the big grounds give you a lot of opportunities to show your fielding skills. क्या catches लिए जा रहे हैं? My God, Miller का catch. Who would believe that guy is approaching 40 and is taking such a stupendous catch? Fielding, मतलब कल Ryan Burl, the catch that he took on the boundary, fabulous catches, running between the wickets. Oh my God, the people are showing their abilities over there, and plus. People commit harakiri also. Nurul Hassan doing the stumping वो जिम्बाब्वे के खिलाफ. मतलब आप कीपर हो. मतलब ये छोटी छोटी गलतियां लोग कर रहे हैं. मतलब पता ही नहीं है, लोगों को नियम नहीं पता है. मतलब फर्स्ट मैच में जिस तरह पाकिस्तान हमारे खिलाफ 22 पे हम लोग दौड़ रहे हैं, वो लोग है कि भाई विकेट पे लगा है, कैसे दौड़ सकते हैं. मतलब ये सब देख के लगता है कि भाई इंटरनेशनल क्रिकेटर्स को भी नियम कानून बता के भेजा करो भाई थोड़ा बहुत, कि वहां पे. So too many of memorable this thing has come. So that's the thing. Yeah, agreed. I mean, I can't remember the last time an ICC tournament was this exciting. And full marks to Cricket Australia. I think they have done a phenomenal job in making that happen. They have not buckled to the pressure of कि साला boundary को 20 meter अंदर लाओ और batting friendly एकदम belter wickets बनाओ. They haven't buckled to that, and the results are showing, right? Yeah. Again, fielding, I think, except for Pakistan and some of India, I think fielding has been exceptional across the board, especially from the smaller teams, which you don't expect normally, right? Lekin Ryan Burl ka jo catch that you're talking about, I think the catch that is not getting talked about enough is the Ryan Burl catch, the one he took before Rishabh Pant's. Wo jo Magarmach style mein jo catch liya. When I saw that, I was like, that is not going to be found in any coaching manual, but it is freaking, it works, right? So I think this tournament has given some really, really memorable matches, and I think if the way the rest of this tournament has gone so far, the semi-finals are going to be absolute crackers. अजित भाई, आपके बोलने से पहले एक चीज, Ryan Burl, a keeper, basically he's a wicket keeper batsman. That's why
That is true. That's why his Magarmach style. Oh yeah, that is true. Yeah. I think he's a wicket-keeper batsman, though he does. But the he was occasional bowling leg spin, spin. right? हाँ, But he he was does. bowling leg spin. अरे भाई, Australia के खिलाफ he took 5 wickets recently in Australia, defeating them in the third one-days. But I think he's a wicket-keeper batsman. तो वो manual जो है ना वहां से आ रहा है उसका. That's the thing. Please, Ajit भाई, आप आए. हाँ, sure. So Ryan Burl पे एक comment. Ryan Burl, if you remember, there was a post that at one point of time got viral कि Zimbabwe के cricketer के पास जूते भी नहीं है. Ryan Burl was the guy who tweeted that photo, saying कि हम अपना जूता रिपेयर कर रहे हैं. So Ryan Burl, very interesting. But of course, this World Cup has been phenomenal primarily because toss is not playing a huge part in the results. उसका जो भी reason हो. But हम लोगों को मजा उसकी वजह से आ रहा है because a lot of times यूएई में पूरे वर्ल्ड कप में हमको पता था कि कौन जीतेगा. जो टॉस जीत रहा है वो चेस कर रहा है और वो मैच जीत रहा है. इट वाज एज सिंपल एज दैट एंड थोड़ा प्रेडिक्टेबल हो जाता है जैसे जैसे गेम एशिया में शिफ्ट करता है. बट क्रिकेट्स ऑस्ट्रेलिया हैज डन अ गुड जॉब, लेकिन ये लोग सैंडविच ठंडा दे रहा है, व्हिच इज नॉट गुड. Okay, one correction. I could not find Ryan Burl. I think he's not a keeper. I think wrong है मेरा ये analysis because उसने आज तक कोई stumping किया ही नहीं है. So keeper तो नहीं है. I'm really sorry. पीपी भाई, true. ये कहाँ सिखाया गया? We'll need to ask him. That's the thing. That's the thing. But चलो बढ़िया. On that note, wrapping up this episode. Thank you for tuning in. Keep watching, keep listening. Subscribe कर लें अगर आप YouTube पे देख रहे हैं इसको तो, क्योंकि हमारा most of the views are coming from people who have not subscribed to us. आप subscribe करेंगे तो आपको पता चलता रहेगा कि जब भी कोई नया episode आएगा, you will get notification. So if you enjoy listening to us, please subscribe. And thanks for tuning in. Bye bye. Thank you. Cricbits and Pieces, an unexpert panel.